ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੱਟ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ? Hello and welcome to the latest episode of the Fan Stand. Here we are discussing IPL 2026, but more importantly, we are supporting and covering the Punjab Kings, the Gabrus of Punjab. And today we're discussing match number 40, where Punjab Kings hosted the Rajasthan Royals in their final game at New Chandigarh Mullapur this season. ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਗੈਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। तो भाजी मैच था मुल्लापुर के न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में। राजस्थान वन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट एंड गोज विदाउट सेइंग इस ग्राउंड पर, इस पिच पर टॉस जीतने का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। उससे भी बड़ा एडवांटेज होता है इफ यू आर चेजिंग, एंड स्पेशली कंसिडरिंग दैट 2 days प्रायर टू द मैच थोड़ी बहुत किणमिण हुई सी, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हुई थी इन एंड अराउंड चंडीगढ़। तो थोड़ी कंडीशंस जो हैं वो चेंज हुई थी, एंड स्पेशली बिकॉज द पिच हैड बीन अंडर द कवर्स। जो पहले टीम बैटिंग करने जाती दे वुड हैव स्ट्रगल्ड टू असेस द कंडीशंस। The team coming in second would have been better prepared and had a better understanding of how the pitch is playing out. So in that sense, Rajasthan winning the toss was a big advantage. And hun paji fatafat gal karte hain what happened in the first innings with Punjab batting and the Rajasthan Royals bowling. वीरे लखनऊ के मैच से पहले मैंने ये चीज़ बोली थी दैट दिस माइट बी अ स्लाइट चैलेंज फॉर द पंजाब किंग्स टू बैट फर्स्ट एंड देन कम इन टू डिफेंड द टोटल। बट एलएसजी के मैच में व्हाट वी गॉट टू सी एंड हाउ पंजाब परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स was just something magical. A part of me, the Punjab fan in me, was really hoping that we could replicate that and just make a sequel out of it. But alas, it wasn't meant to be. And right off the bat, did you see what I did there? The Punjab batsmen seemed really nervous on this pitch. जो मैंने पहले बात करी थी about the changing conditions and how the nature of the pitch had changed, और जो विकेट है वो 2 दिनों के लिए it was also under covers. पंजाब के बैट्समैन नर्वस थे, ये चीज़ बहुत एविडेंट थी, बहुत क्लियरली दिख रही थी। प्रभ सिमरन and Priyansh took a few balls to get started, but Priyansh got off to a great start after that. Priyansh did Priyansh things, smacked the ball around the stadium. It wasn't a long innings, but most importantly जो प्रियांश का रोल रहता है just shooting the run rate straight up, ताकि आने वाले जो बैट्समैन हैं they can just pick it up from there. Prabh Simran on the other hand felt like he was really struggling, especially जब जोफ्रा आर्चर के ओवर पड़ रहे थे. It seemed like he was caught off guard by how the ball was coming towards him. I think partially he was expecting a bit more bounce जो उसको नहीं मिल रहा था. The ball was keeping a little low. थोड़े बहुत mistimed shots भी हुए. There was a leg by that went for a 4. There was a mistimed shot. Nothing front of the wicket. बट पीछे फाइन लेग में वहाँ पर जो शॉट्स मिस टाइम होकर गए और वहाँ से काइंड ऑफ क्लियर हो गया था दैट प्रभ सिमरन इज स्ट्रगलिंग. इट फेल्ट लाइक ही वाज जस्ट holding on to a flagpole in the middle of the storm and waiting for the storm to be over. ਪੰਜਾਬੀ में बोले ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਲਮਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੁੱਕ ਜਵੇ. I think until he reached his 30s he was playing almost like a runner ball, and once he reached in his 30s is when he started attacking and he made his 50. But I genuinely feel like it was a little too late. Sadda Sarpanch, our star, our Sankat Mochan, our leader, he had an off day too. I am gonna say this, it's not gonna happen very often in this tournament, but it happened in this match. Abhi Sarpanch ka usual way of operation jo hai, he takes the first 10, 12 balls, 15 balls even, to just middle the ball, get settled into the pitch, establish his innings, और उसके बाद ये उड़ाना शुरू करता है. लेकिन इस मैच में वो नहीं हो पाया है क्योंकि इधर जो विकेट थी वो बहुत टैकी थी. एंड
again an off day for Sarpanch and the kind of figures you wouldn't hear very frequently in this tournament or even whenever Shreyas is playing. He scored 30 runs of 27 balls. Yes, 30 runs of 27 balls in a total of 222. तो पाजी अगर आपने मैच नहीं देखा है, आप प्रॉबली सोच रहे हो प्रियांश जल्दी निकल गया, प्रभ सिमरन सेट नहीं हो पाया, सरपंच का भी ऑफ डे चल रहा था, तो पाजी फिर 222 तक पहुंचे किवें? एंड द क्रेडिट फॉर दैट goes to our Sattu Veera, Marcus Stoinis, straight from down under, and what an innings that was for Sore Eyes, and that is why Marcus Stoinis is our Gabru of the match here on the fan stand. है भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਮੈਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ, ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ. I'm not gonna lie, it was a little surprising to get this kind of an innings from Marcus Stoinis, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल और इस साल के बीच में हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी सेटअप हो गई है कि द मेजर चंक ऑफ द लिफ्टिंग इज डन बाय द टॉप 3 और द टॉप 4, एंड देन Marcus Stoinis only comes in to give those finishing touches. इधर क्योंकि जो टॉप 3 टॉप 4 जो थे, they couldn't really do much. I think the stage was kind of set for Marcus Stoinis to really come in and take the game away, and that he did. Now, what did you think about that special innings from Marcus Stoinis and his 50? Please don't forget to share your thoughts in the comments below. फटाफट अगर मैं बॉलिंग साइड पर बात करूं, ये पूरे IPL सीजन की स्टोरी ये रही है भी बॉलर भाई जड़े हैगे ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮੈਚਸ ਤੇ, एक्सेप्ट फॉर दैट RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, बाकी सारे मैचेस में बॉलर बस मार खाने आते हैं. बट फटाफट मैं सबके लिए दो दो लाइनें या एक एक लाइन जो है मैं उसमें सम अप करने की कोशिश करूँगा. जोफ्रा आर्चर लुक्ड लीथल इन दैट ओपनिंग स्पेल. The way he was coming at you with that pace, बॉल थोड़ी सी नीचे रख रही है, बैटर्स भी जो है वो थोड़ा घबरा के खेल रहे हैं, and I think that was a splendid spell, so exciting to watch. Brijesh was decent, Jaddu as always was economical, Nandre Murg बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे. Nandre Burger Nandre बस अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर. Nandre Burger was the most expensive bowler for the Royals. बहुत got to pay बेचारे नो. But there was also a Yash Raj for the Rajasthan Royals with some brilliant display of spin bowling in New Chandigarh. और पाजी ये था सारा फर्स्ट इनिंग्स का वेरवा. अभी फटाफट चलते हैं सेकंड इनिंग्स में और उधर बताते हैं कि गेम में क्या क्या हुआ, राजस्थान की बैटिंग ने क्या किया, पंजाब की बॉलिंग ने कहाँ कहाँ पोरी, and where we kind of lost the match. As usual, Rajasthan Royals के लिए बैटिंग ओपन करी वैभव सूर्यवंशी, the 15-year-old prodigy and the golden boy in India right now who just can't seem to get his place in the Indian side, Mr. यशस्वी जायसवाल. और वैभव सूर्यवंशी का जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल प्रियांश आर्या जैसा है. आओ छोटी इनिंग्स खेलो लेकिन अगले को तोड़ के जाओ, और एग्जैक्टली वही सूर्यवंशी ने किया है. सूर्यवंशी डिड सूर्यवंशी थिंग्स. बट दूसरे एंड से यशस्वी जायसवाल played a really mature innings, and I'm not saying mature innings in the sense के टुक टुक करके खेले. आई डोंट इवन मीन के यशस्वी जायसवाल बुढ़ा हो गया. हालांकि प्लेइंग नेक्स्ट टू अ 15-year-old अच्छे भले भी जो है वो बुढ़े लगते हैं. बट यशस्वी जायसवाल वाज एसेंशियली द न्यूक्लियस ऑफ दिस बैटिंग. ओवरऑल he was pacing the chase, he was also rotating the strike, he was attacking the ball, and overall just a brilliant display of batsmanship. और ये एक जो इनिंग्स थी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई एवरीवन रेट्स हिम सो हाईली, स्पेशली इन द इंडियन सर्किट. अभी वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल केम ऑन टू द पिच, एंड अगेन आई फील ध्रुव जुरैल हैज बीन ग्रेट फॉर द रॉयल्स दिस सीजन. जब यशस्वी जायसवाल नहीं भी परफॉर्म कर रहा था, ध्रुव जुरैल वाज गेटिंग देम अक्रॉस द लाइन. ही इज प्लेड सम ब्रिलियंट नॉक्स इन दिस सीजन. बट जैसे उधर सरपंच का दिन नहीं चल रहा था, वैसे ही इधर आज जुरैल का भी दिन नहीं चल रहा था, एंड ही गॉट आउट चीपली. लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान हैं, ही केम इनटू द ग्राउंड, जो BCCI कोटा में खेलते हैं बेसिकली. बट
good news for him. No one is expecting a century or a 50 from him, but he's still managed to get some decent runs at a decent strike rate, and at least he put some runs on the board. That is where I'm gonna leave it. And dude, if you got a smoke, if you got a smoke an e-cigarette, at least कहीं इधर उधर कोने में जाके कर लो ना यार. तुम सीधा उधर कैमरे ने तुम्हें पकड़ लिया. You're athletes, man. जैसे पंजाब को इस सीजन एक वो चीज़ मिली है जो पूरे सीजन नहीं मिली, which was that brilliant knock from Marcus Stoinis right in the middle order. Rajasthan as a team in this entire tournament has heavily relied on their top three. और आज Rajasthan Royals would be so glad that they finally found a couple of guys who can click and pace the innings and take the bowlers down in the form of Donovan Ferreira and the impact sub Shubham Dubey. By the intent with which both of these players played, जिस अटैकिंग माइंडसेट से ये खेले और जितनी क्लीन हिटिंग इन्होंने की है, इवन दो एज अ पंजाब फैन बुरा लगता है कि पंजाब हार गई है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल इनिंग्स टू वॉच. देख के मज़ा आ गया. और फटाफट अब पंजाब की बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं. पेसरों को बहुत मार पड़ी है भाई, बहुत ही बेअंत मार पड़ी है इनको. बट there were a few good surprises. Harpreet Brad finally got his first game, and आते ही the impact that he had, he was the most economical bowler. और दूसरे एंड से यूजी चहल also managed to strike 3 wickets, which is great news for पंजाब. पिच का नेचर चेंज हुआ था, बट एक बहुत क्लियर डिफरेंस दिख रहा था कि ये पिच पर फास्ट बॉलर बिल्कुल नहीं चल सकते हैं. बट दिस विकेट हैड एवरीथिंग फॉर द स्पिनर्स, which almost makes one think that could Cooper Connolly have bowled an over or two in this match? Arshdeep Singh के लिए it is going to be a night to forget. Marco Jansen again बहुत मार पड़ी है. A bowler at 6 feet 6 inches. I think he's 6'6", maybe even taller than that. I've never seen him bowl Yorkers. वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बट आज इतनी डेस्परेशन थी कि उसको भी वो चीज़ करनी पड़ी है. लॉकी फर्ग्यूसन केम इन फॉर जेवियर बार्टलेट, जो मैंने प्रीव्यू में भी एंटिसिपेट किया था, बट he did not have any impact in this game. If anything, Lockie Ferguson को देखकर पता लग रहा था that he has been a little out of touch with the game and he might need some time to tune in. और राजस्थान की बढ़िया बैटिंग के चलते और पंजाब की बॉलिंग में खस्ता हालत को देखते हुए राजस्थान won this game kind of comfortably. बीच में थोड़ा स्टम्बल लग रहा था, but they managed to get across the line and win this match and end Punjab's streak, Punjab's record winning streak in this IPL. तो भाजी ये हमने दोनों इनिंग्स की बात कर ली. अब दो तीन पॉइंट्स जो हैं फटाफट डिस्कस करेंगे. फर्स्टली फॉर द राजस्थान रॉयल्स एंड देन फॉर पंजाब किंग्स. माय फर्स्ट पॉइंट फॉर राजस्थान हियर is that they finally have the perfect opportunity to bring the campaign back on track. They lost their game against SRH, which they should have won, by the way. And then they lost that game उससे भी पहले against KKR, जो उस टाइम पर bottom of the table थे, giving them their first win. Rajasthan as a team, it was a little shaken, but I strongly believe when you defeat the table toppers, when you defeat one of the top contenders for the cup this season, और जिस टीम का इतना तगड़ा विनिंग स्ट्रीक रहा है और जिस टीम ने बाकी सब टीम्स को बुली किया ऑन द पिच, आई थिंक वो एक बहुत अलग टाइप का आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है. और इफ़ यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट, आई थिंक यू स्टार्ट प्लेइंग सम मोर इंस्पिरेशनल क्रिकेट which could land you in the top 2. And the final thing that I want to say with regards to the Rajasthan Royals is that they finally found that spark in the middle. किसी भी टीम के लिए, no team in this tournament does well solely on the basis of their top 3 batsmen. Unless you're a Gujarat Titans, it doesn't happen very often. आपको contribution से होती हैं from the top, from the middle, even from the bottom order. They've tried some different combinations. Shimron Hetmeyer had a beautiful T20 World Cup इससे पहले, but he wasn't really clicking for the Rajasthan Royals. But I think in the form of a Donovan Ferreira and a Shubham Dubey, I think they've got these two really bankable players right in the middle, जो इनकी इनिंग्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं, जो डेथ ओवर्स में कैपिटलाइज कर सकते हैं, एंड कैन मेक श्योर इवन इफ दे डोंट प्ले वेरी लॉन्ग इनिंग्स, बट every single match coming into the death overs,
they can add those 30 40 30 40 runs extra to the team total। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਆਰ ਫਰਸਟ ਡਿਫੀਟ ਆਫ ਦ ਸੀਜ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੀਕ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਨ ਆਫ ਡੇ ਫॉर ਸਰਪੰਚ, the pitch was a little tricky, could happen to anyone। A part of me is actually glad ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, we lost it in the group stage rather than having a day like this or to play in conditions like this when we're in the playoffs or playing the final। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਸ, ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਚ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਐਂਡ when he came onto the ground, he seemed fit and he seemed ready to take on the game, and that is exactly what he did। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕੋਨਮੀ ਰੇਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਰੇਟ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦਾ ਆ। that is how tight his bowling was, that was how good his spell was in this game। and you just wonder that maybe if the game allowed a bowler to bowl more than 4 overs, maybe just 6 overs, we could have won this game solely on the basis of how Brar Saab was bowling। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, you either win or you learn। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੇ ਖੈਰ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ I think this loss has come at a good time। It keeps us on our toes। We can't take any game for granted, we can't take any opposition for granted ਕਿ ਬਸ ਖੇਡੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। This game has essentially given Punjab Kings a reality check on what have we done well in this tournament and what are the areas where we can improve। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ that this match has exposed how crucial our top 4 are for the team। and I don't mean just big scores, I especially mean the attacking mindset, the intent and the strike rates। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਈਅਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੇਅਰ ਗਰੂਵ ਐਂਡ ਇਨਿੰਗਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਨ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, I think we could have easily gone to a 240, which would have been a more defendable total। although ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਇਸ IPL ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਦਾਬਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 240 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 240 ਡਿਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 260 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿਆੰਸ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਨਿੰਗਸ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਆਫ ਡੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 222 ਰਨ ਲਾਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦਿਸ ਕਾਲਸ ਫॉर ਅ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਲ ਦੇ ਆਰ critiquing their performances and they're looking on areas where they need to work, they also draw a lot of confidence from this one thing that even if our top 4 don't perform or someone crucial is having an off day, we still can get to a 200 plus score। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਪੇਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਇਸ ਮੈਚ। ਐਗਰੀਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਸਰਸ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਡੇਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ, ਕਿ ਵਾਈਲ ਵੀ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਚੇਜ਼ ਡਾਊਨ 265, ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਰਨ ਖਾਦੇ ਵੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਵੇਖੋ, ਵੀ ਚੇਜ਼ 200 ਪਲੱਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮੋਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਬਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਰਨ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਟਲੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ, ਪਰ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਗੇਮ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ।
and he seemed to be out of rhythm. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੋ ਯਾਨਸਨ ਅਗੇਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਲੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ IPLs ਵੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਮਾਰਕੋ ਯਾਨਸਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਗਰੂਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਚਸ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਫ ਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜੇ ਵਿਕਟਸ ਤੂੰ ਹਰ ਮੈਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿਕਟ ਹੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਵਿੰਗ ਔਨ ਆਫਰ I think he was trying to force that in-swinger a little too much to a batsman ਜੋ out-swinger ਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ and I'm talking about Vaibhav Suryavanshi here. ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ 2-3 ਮੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਨੌਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਲਰਾਈਟ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ PBKS वर्सेस RR फ्रॉम मुल्लांपुर थोड़ा सा बुरा लगता है कि स्ट्रीक अपनी टूट गई है थोड़ा सा क्योंकि वी हैव मेड अ रिकॉर्ड एंड यार no matter what sport what field you're in if you're on a streak you never want it to end पर sports ਹੈਗਾ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਦਿਸ ਇਨਫ ਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਪਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਫॉर अ लॉस जो हो गया कल एंड आई एम काइंड ऑफ रिलीव्ड दैट अब हमें स्ट्रीक की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है हुण साडा फोकस इट शुड ओनली बी अबाउट प्लेइंग गुड क्रिकेट अगेंस्ट गुड ऑपोजिशंस रिगार्डलैस ऑफ द सिचुएशंस द कंडीशंस द पिच क्योंकि इस टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਮੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਸੀ ਸਪੋਂਸਰ ਆ ਦ ਫੈਨ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਿਵਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਡਰੋਪ ਮੀ ਅ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਇੰਸਟਾ DM ਸੇਇੰਗ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਫ ਡੇ ਫॉर ਅ ਫਿਊ ਪਲੇਅਰਸ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫੜਾ ਦੇਈਦਾ ਆ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਕੋ ਯਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਯਾਰ ਆਪਣੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੋ ਬਟ थोड़ी सीरियस बात अगर करें आई थिंक आर क्वालिफिकेशन सिनेरियो is still looking the best of the lot. We've still got 6 games to play. हम अभी तक 8 मैच खेल चुके हैं 6 मैच अभी हमारे बचते हैं और 6 में से अगर हम 3 जीत जाते हैं we get to 19 points और 19 points पर I firmly believe कि टॉप 2 जो है वो guaranteed है अभी आने वाले मैचेस में we also have to play Mumbai Indians again we have to play LSG I think there is a match against KKR also and a match against Rajasthan. So there are a lot of opportunities where Punjab can really capitalize. एक मैच हमने RCB के अगेंस्ट खेलना है और वो एक मैच है जो खासा मतलब जिसको लेकर मैं थोड़ा हाइप्ड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बट आई स्टिल बिलीव इट इज़ जस्ट वन लॉस एक ख़राब गेम से टीम नहीं ख़राब हो जाती है आई एम स्टिल सपोर्टिंग माई बॉयज़ आई स्टिल वॉन्ट देम टू डू वेल थोड़ा बहुत यार क्रिटिसिज्म देखो यार करना पड़ता है इट्स लाइक माई पेरेंट्स एंड आई एम प्रिटी श्योर इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब योर पेरेंट्स वुड हैव सेड इट टू यू इज़ वेल कि ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਆਣਾ ਫੈਂਟਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੈਂਟੋਗੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਦੈਟ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਇਨ ਅ ਵੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ them ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਵੀ ਵਾਂਟ them ਟੂ ਪਲੇ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਭਾਈ especially if you are one of the players in the Punjab camp
मेरे किसे गल दा बुरा नहीं मनाना. I only want the best for this team like you guys do. ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਨੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਬਟ let it be known in my heart of hearts, I only want you to be the best damn team there is. All right, that was the analysis for match number 40, Punjab Kings versus Rajasthan Royals, which Rajasthan Royals won, ending Punjab's streak. This was also our last game at Mullapur for the season. Is to baad, we've got a few away games and our home base is going to shift to the hills to the beautiful stadium of Dharamshala. And up next, on the 3rd of May, we've got our first reverse fixture of the season against the Gujarat Titans. We are going to be facing off against Fazal Kade Gail Saab, and we're going to hopefully defeat them again and get 2 points in our bag. वो जो मैच है उसका एनालिसिस और प्रीव्यू जो है आई स्टिल हैव टू फिगर आउट, एंड दिस इज़ जस्ट अ लिटिल पर्सनल अपडेट. मैं आई थिंक अपनी एक आधी वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि वी आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम दिस अपार्टमेंट टू द अदर वन. तो मेरा सेटअप वगैरह जो है अभी it is in a mess. I'm still figuring it out how it's all going to be set up in the other apartment. But most likely, कैसे भी करके, I will try and put on a show on either the 2nd of May or the 3rd of May, जो मैं pre-match live preview करता होता हूँ. And either way, I'll figure out the logistics and the operations. Hopefully, I can get that on the road. But this is gonna be the last video from this apartment, from this background. I mean, you might see a similar background in my next video, but thoda sa setup jo hai change hoga. But like always, if you like this video, please don't forget to hit that thumbs up button. Share this video with your fellow Punjab fans. थोड़ी उन्ना ही spirit ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਭਾਜੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ. And subscribe to the Fan Stand. If you've been liking my fan energy, if you've been liking my analysis, if you want to be a part of my journey on making this the greatest Punjab Kings channel on planet Earth. Until next time, take care and don't lose faith. We still got it.